सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृदन्त प्रत्ययानां विचारः अस्माभिः क्रियते। कृदन्त प्रत्ययेषु तुमुन् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, ल्यप् प्रत्ययः अस्माभिः अधीतः। अनन्तरं तक्तवतु इति निष्ठा संज्ञक प्रत्ययस्य अभ्यासः अस्माभिः क्रियते। निष्ठा इति सूत्रेण तत्र धातोः निष्ठा प्रत्ययः क्रियते। निष्ठा क्रियते नाम त अथवा तवतु प्रत्ययः क्रियते। कुत्र तकार त प्रत्ययस्य उपयोगः, कुत्र तवतु प्रत्ययस्य उपयोगः, तस्य विषये गतकक्षायाम् अस्माभिः किञ्चित् विचारः विहितः आसीत्। त प्रत्ययस्य उपयोगः भावे प्रयोगे तथा कर्मणि प्रयोगे भवति। कर्मणि यदि वाक्यं पैसिव वॉइस मध्ये यदि वाक्यं निर्मातव्यं चेत् तत्र त प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। एक्सेप्शन्स् अपि वर्तन्ते तत्र। अद्य अहं तद् एक्सेप्शन् इत्यादिकं बोधयिष्यामि। क्तवतु प्रत्ययस्य अभ्यासः गतकक्षायां कृतः। क्तवतु प्रत्ययस्य उपयोगः नाम तवत् प्रत्ययस्य उपयोगः कस्मिन् प्रयोगे भवति इति चेत् कर्तरि प्रयोगे। रामः फलं खादति. If we want to make the past tense of this sentence, either we have to make Ramah phalam akhadat, but akhadat becomes little bit difficult. So that's how they have introduced the pratyaya stavatu pratyaya. So Ramah phalam khaditavan, aham patham patitvan, aham patham apatham. So rather than remembering, apatham, apathat, etc., etc., the simple method is to remember just Kitavatu Pratyanta form, Patitavan, Khaditavan, Gatavan, Uktavan, Vagara Vagara. So these were some examples. Also, we have practiced, we have seen one story regarding this. Right? This story we had seen. Right? ये वाला देखा था हमने. This was another story which I had asked you to go through. So we'll practice this after the introduction of the pratyaya. Now, again, the pratyaya has same saujna, that nishtha, and it will happen after dhatu, main root, the pratyaya. The structure goes like the past passive participle. It is known as, for example, Ravanaha Hataha. And when we add Kcha Pratyanta form, again, it will have now genders. Only Tumun Pratyaya, Tva Pratyaya, and Lep Pratyaya, they are Avyayas. They become Avyaya. Declension will not happen of those three Pratyayas. Apart from those three Pratyayas, Tavatu Pratyaya, Tumun Ta Pratyaya, Shatru Pratyaya, Shanach Pratyaya, Tavyat Pratyaya, Anyar Pratyaya, Yat Pratyaya, they will have declension. They are like a Visheshana. If you want to use in Pullinga, the Pat Dhatu, Ta Pratyanta form, if we form, it will go like Patitaha in Pullinga. In Strilinga, it will be Patita. In neuter gender, in Napusaklingam, it will be Patitam, कृतः, कृता, कृतम. राम जैसा यदि कोई भी कृता प्रत्यंत फॉर्म है, उसको कैसे डिक्लाइन करेंगे? कृतः, कृतौ, कृताः. राम जैसा रामः, रामौ, रामाः, कृतः, कृतौ, कृताः, पठितः, पठितौ, पठिताः. In all 7 cases it will be used, right? Similarly, krita, krite, kritaha. Lata shabda or Rama shabda, if we have memorized, we can decline like lata, late, lataha. Similarly, krita, krite, kritaha, kritam, krite, kritaha. Neuter gender, vanam, vane, vanani, vanam, vane, vanani. Kritam, krite, kritani, kritam, krite, kritani. Again, some rules we will see regarding this. नपुंसक भावार्थे क्त प्रत्ययः उपयुज्यते. अरे अयं नियमः कथं साक्षात् किञ्चित् मिसिंग वर्तते. एनिवे, तत्र बहवः नियमाः भवन्ति.
नियमः अहम् एवमेव वदामि, कदाचित् एक स्लाइड मिस वर्तते। नियमः, we have to remember 3-1-1, the structure of karmani prayoga. Whenever you want to make a sentence in kartari, in कर्तरी प्रयोग what we do 1-2-1, कर्तरी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है 1-2-1। एंड जब हम कर्मणि का सेंटेंस बना रहे हैं तो 3-1-1, इन द सेंस कर्ता विल बी इन तृतीया विभक्ति, कर्म विल बी इन प्रथमा विभक्ति एंड क्रियापद विल फॉलो कर्म। तो जो कर्म प्रधान प्रयोग है उसको कर्मणि प्रयोग बोलेंगे, मतलब आपका क्रियापद कर्म के ऊपर डिपेंड रहेगा। कर्म में यदि प्रथमा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो उसके जैसा आपका क्रियापद बनेगा। तो बेसिकली जो प्रत्यय अभी क्त और तवत प्रत्यय कर रहे हैं, फिलहाल हम क्त प्रत्यय के ऊपर फोकस करेंगे। क्त प्रत्ययांत जो कुछ भी फॉर्म होगा, जैसे कि कृतः, कृता अथवा कृतम, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स कर्म। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अ सिंपल सेंटेंस, ये वाला अभी स्टॉप कर देता हूं। जैसे कि रामः पाठम पठति, इसका यदि कर्मणि बनाना है और भूतकाल हमें करना है तो कैसे बनेगा? रामः इज इन प्रथमा, वी नीड टू चेंज इनटू तृतीया विभक्ति, इट विल बिकम रामेण रामेण। करेक्ट, रामेण। पाठम पठति इति वाक्यम आसीत्, पाठम इति द्वितीयायाम आसीत्, द्वितीय विभक्ति में था ये वाला पद, उसको किसमें करना है? पाठः प्रथम, पाठः। सो रामेण पाठः। अभी ये पाठ ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अभी कर्म में आया हुआ शब्द यदि पुल्लिंग में है, पाठ शब्द पुल्लिंग में है और सिंगुलर में है, तो उसके हिसाब से आप जो आगे वाला प्रत्यय लाने वाले हो, पठ धातु के साथ क्त प्रत्यय, शब्द बनने वाला है पठित। तो पठित ऐसा बनने के बाद उसमें पुल्लिंगत्व आना चाहिए, क्योंकि कर्म पुल्लिंग में है। वो एक वचन में था, पाठ शब्द एक वचन में था, इसलिए आपका कर्म पद भी, आपका क्त प्रत्यंत फॉर्म भी इसमें आएगा, पुल्लिंग में एक वचन में आएगा। सो रामेण पाठः पठितः। इफ देयर आर मेनी लेसन्स वी हैव टू से रामेण पाठाः, अल्टीमेट फॉर्म विल चेंज, पठिताः। राइट, दिस इज द मेन रूल, बट इतना ही समझना है इसमें। ओके, रामेण पाठः पठितः। Regarding this, I will just introduce the exceptions. Basically, this is the common rule. What? Takta pratyanta form will be used in either bhave prayoga or karmani prayoga. This was basic rule. तो जनरली कृतवतु प्रत्यय खादितवान पीतवान ये हमेशा कर्तरी में यूज होता है, ऐसा उन्होंने बोला। और क्त प्रत्यय हमेशा भावे में या कर्मणि प्रयोग में यूज होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन वहां भी एक एक्सेप्शन है, वहां एक सूत्र आता है, गत्यर्थ श्लीष शिंग स्था आस वस जन रूह जीर्यभ्य तत्कर्तरी कर्मणि भावे च। तो इनमें गत्यर्थक कोई धातु है जहां गति दिखाई देती है, गच्छति, भ्रमति, चरति वगैरह वगैरह, गत्यर्थ जो भी क्रियापद है उनके साथ आप तीनों प्रकार के प्रयोग कर सकते हो। कर्तरी भी कर सकते हो, कर्मणि भी कर सकते हो एंड भावी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देवदत्त ग्रामम गच्छति, फिलहाल सिंपल वाला प्रेजेंट में समझ लेते हैं। देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो एक्चुअली एक गत धातु जो गम धातु जो है वो गत्यर्थक है, मूवमेंट दिखाई देती है वहां, है ना। तो जब भी गत्यर्थवाचक कोई धातु आता है उसके साथ आप कर्मणि भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, भावे प्रयोग भी कर सकते हो और कर्तरी प्रयोग भी कर सकते हो। जब कर्तरी करेंगे तो फॉर्म कैसे बनेगा? 1-2-1। फॉर एग्जाम्पल, देवदत्त ग्रामम गतः,
देवदत्त गांव गया। कर्मणि में फॉर्म करेंगे सेम सेंटेंस, तो कैसे बनेगा? देवदत्तेन ग्रामः गतः। देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन दिस। इन फर्स्ट सेंटेंस 1 to 1, तो कर्ता प्रथमा में आएगा, कर्म द्वितीया में आएगा, और गत विल डिपेंड अपॉन कर्ता। तो कर्तरी प्रयोग का सेंटेंस हो गया। देवदत्तेन ग्रामः गतः, हियर फोकस वुड बी ऑन कर्म पद। तो कर्म पद में ग्रामः पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में है, इसलिए यहां क्या बनेगा? गतः ऐसा बनेगा। यहाँ इन दोनों के ऊपर चल रहा है, कर्म के ऊपर ये डिपेंड होता है, और यहाँ गतः देवदत्त के ऊपर डिपेंड था। ओके, एंड भाव प्रयोग में क्या होता है? भाववाचक शब्द बन जाता है। देवदत्तेन गतम, देवदत्त से गया गया, कैसे बनेगा ये? देवदत्त गया, इतना ही अर्थ करो। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। देवदत्तेन गतम, देवदत्त गया, ऐसा अर्थ करो। सिमिलरली श्लेष धातु, श्लेष आलिंगने, ऐसा अर्थ होता है आलिंगन अर्थ में, कुस्यति आश्लिषति इत्यस्मिन् अर्थे। माता कन्याम आश्लिष्टा, तो यहाँ आश्लिष्टा यद्यपि टा प्रत्यंत रूप है, क प्रत्यंत रूप है, क प्रत्यय हमेशा कर्मणि भावे में यूज होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला सूत्र है। श्लेष धातु का प्रयोग हम कर्तरी में भी कर सकते हैं। कर्मणि में तो होता ही होता है, भावी में तो होता ही होता है, लेकिन कर्तरी में भी प्रयोग हो सकता है। माता कन्याम आश्लिष्टा, मात्रा कन्या आश्लिष्टा, मात्रा आश्लिष्टम, माता ने आलिंगन दिया। ओके, सिमिलरली शिंग धातु, शिंग शेते शयने, उसमें उपसर्ग लगा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। देवदत्तः गुरुम उपशयितः, उपशयितः समीप रहना, पास रहना। देवदत्तेन गुरुः उपशयितः, एंड सिमिलरली देवदत्तेन उपशयितम, right? So this is how it goes. Similarly, if there is a stha, as, was dhatu, along with stha tishtati, as aste, vasa vasati, along with this again कर्तरी भी कर सकते हो, कर्मणि भी कर सकते हो, एंड भावी भी कर सकते हो। सो नारायणः गुरुं उपस्थितः, देयर आर सम typos, let me make some changes. It should look like what happening. Anyway, we'll change it later. हाँ, नारायणः गुरुम् उपस्थितः, नारायणः गुरुम् उपासितः, नारायणः गुरुम् अनुशीतः, मतलब क्या? नारायण जी गुरु के पास रहे। सिमिलरली यू कैन फॉर्म द पास्ट व्हाट कर्तरी कर्मणि also and भावे also. नारायणेन गुरुः उपस्थितः, उपासितः, अनुशितः। सिमिलरली नारायणेन उपासितम, भावे प्रयोग भी, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है उसको भावे प्रयोग बोलते हैं। along with, so we have seen gatyarthak dhatu like charati, gacchati, भ्रमति etc etc. श्लिषति धातु कुस्यति आलिंगन करना, शिंग धातु शयनार्थे, स्था धातु तिष्ठति अर्थे, आस धातु वस धातु सिमिलर अर्थे, सेम मीनिंग, स्था आस वस इनका सेम अर्थ है। अगला आता है जन धातु, जन जायते, उत्पन्न होना इस अर्थ में। तो अगेन जन जायते, दिस धातु also will be used in कर्तरी also, कर्मणि also and भावे also, like पुत्रः कन्याम अनुजातः, मतलब कन्या के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्रः अनुजातः। सो द अनुजातः वर्ड और प्रत्यंत फॉर्म विल डिपेंड अपॉन कर्ता, पुत्रः। इन कर्मणि प्रयोग पुत्रेण कन्या अनुजाता, कर्मणि फॉर्म स्ट्रक्चर विल चेंज, एंड पुत्रेण अनुजातम, पुत्र उत्पन्न हुआ। अगला क्रियापद है रुह, रुह रोहति, ओके, रोहति, वृद्धिं प्राप्नोति इति अर्थ।
अथवा आरोहति, when we add आ उपसर्ग along with रोह धातु, it becomes to climb. तो देवदत्तः वृक्षम आरूढ़ अस्ति, अथवा देवदत्तेन वृक्षः आरूढ़, देवदत्तेन आरूढ़म. तो कर्तरी, कर्मणि एंड भावे, ऐसे तीन फॉर्म ऐसे बनेंगे. अगला धातु है जृ, क्षीण होना, जीर्यति इति अर्थः. सो प्रत्यंत फॉर्म यदि करते हैं तो जीर्ण ऐसा शब्द बन जाता है. अनुजीर्ण, कृष्णः दुर्जनम अनुजीर्ण, कृष्णेन दुर्जनः अनुजीर्णः, कृष्णेन अनुजीर्णम् इति सर्वत्र रूपाणि भवन्ति. तथा भावे क्रियापदानि यानि सन्ति, सुप्तं, स्थितं, हसितं, रुदितं, लज्जितं, जागरितं, वर्धितं, एतादृशाः बहवः तत्र उदाहरणानि, एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि भवन्ति. सामान्य नियमः कः? एतत् पूर्वं भवेत्. वस्तुतः सामान्य नियमः एवं अस्ति, क्तः प्रत्यय कर्मणि तथा भावे प्रयोग में होता है, कर्म के अनुसार प्रत्यय चलते हैं. तो बेसिकली 3-1-1, दैट इज द रूल. सो फर्स्ट सेंटेंस, मया पुस्तकं पठितं, मया टिप्पणी पुस्तिका पठिता, मया कथा श्रुता, भोजनं खादितं. So meaning would be, you can explain the meaning now. The first one would be मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया. Is that right? Yes, the book was studied by me. Tippani Pustika means book was read by me. The story was listened or heard by me. Bhojanam, the food was eaten by me. So again it depends. See, pustakam shabda in neuter gender napusaklingam iti kritva pathitam. Tippani pustika is in strilingam, so pathita. Katha strilingam, so shruta. And bhojanam is neuter gender, bhojanam khaditam. It depends upon karma. कर्म जिस लिंग में है या वचन में है उसके अनुसार कृत प्रत्यंत फॉर्म भी यूज किया जाएगा. अगला, अस्माभिः लेखाः लिखिताः पत्राणि पठितानि. By all of us, letters were written. So letters were written by all of us. तो स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर पहले आप कर्म ये करेंगे, हाईलाइट करेंगे. लेखाः, लेखाः, लेख शब्द का क्या बोलेंगे इंग्लिश में? I don't know. I think it is letter. The articles, Right up here. Articles. Articles were written by us. Similarly, patrani patitani. So I'm sorry, I'm going back to, I have some fundamental question here. Does this need a dhatu here or no dhatu? That is the dhatu. Sorry. Like asmabhi lekaha patitaha asit or something like that. You use a dhatu or you don't need to use a dhatu? Are apurna kriya, in the sense we need to add some dhatu, in the sense after kta pratyaya or tavatu pratyaya, if we add as dhatu or bhu dhatu, it will be good. If we don't use, we have to guess that there can be like as dhatu or pad dhatu. For example, अस्माभिः लेखाः पठिताः आसन्, हमने पढ़े थे. और हम यदि ऐसा बोलना चाहते हैं हमने पढ़े हैं, तो हम बोलेंगे अस्माभिः लेखाः पठिताः सन्ति, है ना. तो लेटर्स वर रिटन बाय अस और रेड बाय अस. इंग्लिश में ऐसे बनेगा. हिंदी में हम दोनों प्रकार के, यदि वर्तमान में भी मतलब अस्ति यदि लगाते हैं तो हमने पढ़े हैं, और यदि हम बोलते हैं आसित तो हमने पढ़े थे आसन, ऐसा बनेंगे. जी. So if we don't use dhatu also, it's okay. It is inferred. It is inferred. It's okay, totally okay.
नेक्स्ट सेंटेंस, तेन पादौ हस्तौ च प्रक्षालितौ, मुखम तु न प्रक्षालितम्। मीनिंग, by them the feet and the hands were washed. The face was not washed. By that. by him. So सह तौते तम, By तेन, by him, by. Tani. Now regarding, oh, I didn't made change. I had made changes, but Sahataute I tena by them. got, little bit. All these things I had done long before in the sense before starting Kridanta, but क्या करें अभी, फिर से मुझे सारा बनाना पड़ा है इसलिए। एनीवे, तो द रूल गोज लाइक, भावे प्रयोग जब भी हम यूज करते हैं तो भावे में जो भी सेंटेंस फॉर्म होता है वो सेंटेंस हमेशा न्यूट्रल जेंडर में, नपुंसकलिंग में होता है। कृत प्रत्यंत जो भी फॉर्म आएगा वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर में और एक वचन में ही आएगा। हसितम, खादितम, रुदितम, सॉरी, हसितम, रुदितम, ये जो भाववाचक शब्द हैं वो हमेशा किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आएंगे और एक वचन में आएंगे। तैहि रुदितम, तेन रुदितम, तया रुदितम, मया रुदितम, आवाभ्याम रुदितम, अस्माभिः रुदितम। कर्ता कोई भी रहे, भाववाचक शब्द बन जाता है रुदितम, हसितम वगैरह, और हमेशा एक वचन में वहां यूज किया जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में, एक वचन में। ये दो रूल इसके जरा मतलब याद रखने जैसे है। उसके बाद एक्सेप्शन यदि याद रहता है तो अच्छा ही है। गत्यर्थ कर्मक ये धातवः पुनश्च गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे श्लिष्यति, तिष्ठति, वसति, जायते, रोहति इति अनेषु इति धातुषु किं भवति? प्रत्ययः अपि भवति, नाम कर्तरि प्रयोगः अपि भवति, कर्मणि अपि भवति, भावे अपि भवति इति। सः गृहं गतः, सः ग्रामं प्राप्तः, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द श्लोकस् विल सी। सद्भिस्तुलीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम् असद्भिः शपथेन। एक शब्द मिसिंग है वहां, कुछ असद्भिः तो कुछ तो गड़बड़ है। असद्भिस्तु शपथेन जले लिखितम अक्षरम, ऐसा कुछ होगा। हाँ, एनीवे, कैन यू गेट द अन्वय एंड मीनिंग? सद्भिः, सत् सज्जनो सज्जनैः इति कर्तुं शक्यते। सज्जनैः तु लीलया प्रोक्तम्, लीलया जस्ट देयर कैजुअल वर्ड्स, एवमेव लीलया उक्तम्। तथापि लीलया अपि उक्तं तद् अपि कीदृशं भवति? शिलालिखितम् अक्षरम् इव भवति। यथा शिलायां यत्किमपि लिख्यते तत् केनापि मार्ष्टुं न शक्यते, परिमार्जयितुं न शक्यते। तादृक् वचनं, तादृशं वचनं केषां भवति? सज्जनानां भवति इत्यर्थः। नाम यत् ते वदन्ति ते कुर्वन्ति अपि, यथा उक्तं तथा कुर्वन्ति। किन्तु असद्भिः शपथेन वा इति कुर्मः, असद्भिः शपथेन वा शक्यते। आम्, असज्जनाः ये भवन्ति, दुर्जनाः ये भवन्ति, ते किं कुर्वन्ति? शपथं दत्वा किमपि विददाति, किमपि प्रतिपादयन्ति, किन्तु तेषाम् अक्षरं कीदृशं भवति? जले लिखितम् अक्षरम्, जले लिखितम् अक्षरम् इव तेषां स्टेटमेंट, तेषां प्रतिज्ञा भवति। यद्यपि ते प्रतिजानन्ति तथापि ते कार्यसिद्धिं न कुर्वन्ति इति अर्थः।
अग्रिमम्। तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी by 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 him he by him following him Janasthana Nivasini, the Janasthana Nivasini Tatra eva vasata, they lived there only. Tatraiva vasata tena, one who was living there itself, right? तेन लक्ष्मणेन कदाचित् लक्ष्मणस्य कृते एषा उपमा अस्ति। जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता। Oh, the whole sentence is okay. This first sentence is not complete by itself. You have to read the next one too. Virupita Shurpanakha Rakshasi Kamarupini. So basically, Tena Shurpanakha Virupita is the main sentence. What is that? Say that again. Tena nama Lakshmanena Shurpanakha Virupita. Okay, the Shurpanakha was विरूपित, मतलब क्या बोलेंगे अभी विरूपित करना? Disfigured. हाँ, disfigured by Lakshman. Which kind of Shurpanakha? Kamarupini, who can take the form, whichever form she wants to take, she used to take. Kamarupini, yatha kamam रूपम परिवर्तिनी, या रूप परिवर्तनम कर्तुम शक्नोति सा कामरूपिणी। पुनश्च कीदृशी? राक्षसी। पुनः कीदृशी? जनस्थान निवासिनी, वन हु यूज्ड टू लिव इन दैट जनस्थान, इन दैट आरण्यक। हमारे नासिक में उनका नाक कटा है ना? दे so yeah, this is how our city got the name Nasik. So basically that is called Aranya, Dandakaranya. Okay, next one is a very nice shloka actually. Nasa sankuchitah pantha ena vali hato gatah samaye tishta sugriva ma vali pathamanvagaha. Ramji sends the message through Lakshman when he forgot. Sugriva forgets his responsibilities, his duties. Then Ramji suggests him, Babare, don't forget. Nasa sankuchita pantha, that path through Wali travel is not closed yet. बंद नहीं हुआ अभी तक वो। न च संकुचितः पंथा, सह पंथाः न संकुचितः एतावता, अभी तक वो पाथ बंद नहीं हुआ। कौन सा वाला? एन वाली ही हतः गतः, जिस मार्ग से बाली हत हुआ और वहां से चला गया, वो वाला मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ। इसलिए समये तिष्ठ सुग्रीव, हे सुग्रीव, समये तिष्ठ, यू फॉलो व्हाट यू हैव सेड, राइट? Ma Vali Pathamanvagaha, don't go like in the same path through which Bali has traveled. जिस मार्ग से बाली ने ट्रैवल किया, मतलब बाली मेरे हाथों से मरे हैं, है ना? सो डोंट डाई विथ माय हैंड्स। ये मतलब इसको बोलते हैं दम देना, है कि नहीं? एकदम सौम्य शब्दों में दम दिया है राम जी ने। He doesn't say like I will kill you. He will say, if you don't follow your own words, there will be something wrong. Similarly, सताभ्याम पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीति विक्रांतः
संक्षेपेण न्यवेदयत्. शताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा. So हम्म, the by the Satabhyam means by the good people, शताभ्यां by the people. Pujitaha Pujyaha means who were worshipped. one who was pujita, worshipped, and one who was honored. That kind of. Pujya. Again, Kapibhishta Prasaditaha, one was pleased by Kapis, monkeys, in the sense all other their co-friends. Drushta Devi iti Vikrantah Sanshepena Nivedayat. So, Devi Drishta, Sita Devi Maya Drishta iti Vikrantah Nama Vikrami Hanuman संक्षेपेण निवेदितवान अथवा निवेदयत इति पास्ट टेंस. यहां डायरेक्टली उन्होंने लंग लकार का यूज किया. संक्षेपेण निवेदयत उन्होंने राम जी को बताया. सुंदरकांड का श्लोक. ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड इवन क्त एंड क्तवतु प्रत्यय. ओके, ये एग्जांपल इसका था ना, क्त प्रत्यय. ओके, so apart from this, so I had asked you to go through some text like Gita or whatever. Have you? Any shlok from Prakaran Grantha or Srimad Bhagavad Gita or in Nitashatakam, Subhashitam, etc., etc. Okay, we'll see that story. Remaining part we will finish it within 8 or 7 minutes. This one, right? Okay, this one we shall finish. Okay, we have only 6 minutes. Try to finish within 6 minutes. महाभारतम महाभारत युद्धम आरब्धम आसीत्. Mahabharata Yuddha was it started. Next. Bhishmaha Kauravanam Senapatihi Bhutva Ashtadivasan Yavat Bhayankara Yuddham Krutavan. Bhishmaha Kauravanam Senapatihi Bhutva Ashtadivasan Yavat Bhayankara Yuddham Krutavan. Bhishma called the Senapati of Kauravas. Bhutva, having become. So he was Senapati. Before he became the Senapati of the Kauravas. Ashtadivasan. For 8 days, he did Bhayankara Yuddha. Nice. He Pandavaha tasya purataha yuddham kartum asamartaha chintamagnaha cha asan. So Pandavas, in front of him, they were not able to conduct the war and they were in deep worry. Next. Prarthana ji can go if she wants. Okay.
तथापि भीष्मः पाण्डवेषु एकमपि न मारितवान् इति मत्वा दुर्योधनः खिन्नः आसीत्. So despite the Bhayankar Yuddha, Bhishma did not kill even one Pandava, and Duryodhana was unhappy. Khinna is unhappy or dissatisfied? Yeah, unhappy only. Okay, Duryodhana was very unhappy because of this. Hmm. अतः सः भीष्मं दृष्ट्वा अवदत्. Therefore, he looked at Bhishma and said, "Ho Pitamaha, Ho Pitamaha, मत् अपेक्ष्या पाण्डवाः एव भवतः प्रियाः." Bho Pitamaha, I mean, he addressed Pitamaha, his Pitamaha, and said that I believe that it's only Pandavas who are near and dear or prior to you. Ataha bhavan yuddhepi taihi saha kridati. So therefore, you are playing with, despite the war, yuddhepi, so yuddhe api. So despite the war, you are playing with them. Na kamapi is it kamapi marayati? Kimapi marayati? Kamapi, what does kamapi mean? Second, kah kauke kam. Kam Oh, okay. योद्धा Okay. मारयति पांडवम न मारयति. So you're just playing with them, you are not killing them. Kah kauke kam. Can you say that again, sir, please? Kah kauke kam kaukan? येन काभ्यं कैः कस्मात् कस्मै काभ्यं केभ्यः कस्मात् काभ्यं केभ्यः कस्मात् कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु. No, where does this kamapi fit? कः कौके कम द्वितीय विभक्ति एकवचनम. Okay, kam api. Okay, thank you. कः कौके कम कौकान् केन काभ्यं कस्मै केभ्यः कस्मात् काभ्यं केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु. Yes, द्वितीय विभक्ति Kam api. Okay. अग्रिमम्. एतत् श्रुत्वा भीष्मः दुःखितः जातः. So having heard that, Bhishma he felt sad. झटिति सः प्रतिज्ञां कृतवान् यत् श्वः युद्धं कृत्वा अहम् अर्जुनं मारयिष्यामि. So quick, झटिति is like quickly. Quickly he did pratignya, and he said, tomorrow I will do the war and I will kill Arjuna. अथवा तेन पराजितः, or I will be defeated by him. वा भविष्यामि इति. That is one sentence. अथवा तेन पराजितः वा. Yeah. भीष्मस्य प्रतिज्ञा सर्वैः ज्ञाता. So everybody heard. His pratignya was heard by everybody. We'll join this meeting with same link. We'll finish this story at least. Okay. Prarthana ji. Sorry. तां प्रतिज्ञां श्रुत्वा पाण्डव पक्षे सर्वेपि वीराः चिन्तिताः अभवन्. So upon listening to this, pratigya by Bhishma, everybody in the Pandava Paksha became very concerned, they were worried. Krishnah api chintavashat ratrau nidram na praptavan. Lord Krishna also was worried and could not sleep that night. Bhishma pratigyam nyatva arjunah tu nitaram chintitah syat.